Hi friends, Sanjukta here. Welcome to my YouTube channel DigiTeach. As you know, in my channel you are getting all the videos related to CBSE syllabus for class 11th and 12th, Computer Science with Python. So friends, in this video I am going to discuss few questions from the chapter Interface Python with MySQL. Watch the video till end so that you can clear your doubt, and at the same time, without getting any confusion, you can attend the questions from this chapter in your term 2, both theory and practical examination. So friends, if you like my video, then subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the new updates. So keep watching. Thank you. Let's start the first question. Write a Python database connectivity script that insert a new row with the following specification to the EMP table of database employee and fetch all the records from the EMP table. So basically this is one Python database connectivity program you need to write, and here what do you do? That means you have to just insert a new row to the existing table, and the table name is EMP and that table is stored in the database employee, right? So friends, देखो ये क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे, अगर आप ये क्वेश्चन थियोरी एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे हो या फिर थियोरिटिकली सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप कैसे लिखोगे, और अगर ये प्रैक्टिकली आप सॉल्व कर रहे हो, कंप्यूटर में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप उसको थियोरिटिकली कैसे सॉल्व करोगे. अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम थियोरी एग्जाम में आ रहा है तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे. फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हो तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे. राइट, so let's discuss. As you know, to write any Python database connectivity program, first statement is import mysql.connector, right? Import mysql.connector. As you know that mysql connector is the package, and we have to import this package to our Python program. Why? Because this package already includes some functions like connect function, so we can use the connect function to establish the connection between our Python application to the database, right? So first statement will be the import mysql.connector. After that you have to just create the connection, establish the connection. So how will you do that? Just mycon equal to mysql.connector dot connect. देखो ये जो कनेक्ट फंक्शन ये कहाँ पे अवेलेबल है, आपकी mysql.connector पैकेज में अवेलेबल है, और ये कनेक्ट फंक्शन पे आपको 4 पैरामीटर्स पास कराना पड़ेगा. राइट, दिस 4 पैरामीटर्स आर, फर्स्ट वन इज योर होस्ट, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट because this is the host name of your MySQL server, right? So here host equal to local host. After that user, this is the user name, that in this this time I have given the username as root, so username is root. And password, password also I have defined at the time of installing MySQL server in my system. At the time I have given my password, so this password I have to provide now. So my password is my name, so it is Sanjukta. No problem, you can provide your password. Then friends, you just see here is the difference. If you are going to solve this question theoretically, then already the information given to you that you have to create, you have to include the database employee to your program, because you assume that already employee database is created, and in that employee database EMP table is also created, right? So you just include that database employee, because in our question it is written कि आपको employee database use करना है. So we have included the employee database. So friends, here this particular statement that mycon equal to mysql.connector.connect, 4 parameters I have used here. One is host, that is value is localhost, user equal to root, password equal to your password, and database equal to employee. So connect, with the help of connect function you can establish the connection between your Python program to the database application, right? And this connect function returns one connection object to you, and here I have assigned that connection connect object in my mycon variable name. So mycon is the connection object. Hope all of you understood. After creating the connection, you can check now whether you have established the connection properly or not. So here you can use if mycon dot is connected function. Okay,
ये एक इज कनेक्टेड फंक्शन भी आपकी कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या आपने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन। और ये अगर आपने एस्टेब्लिश किया है कनेक्शन सक्सेसफुली तो आपको ये इज कनेक्टेड फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। सो जस्ट यू प्रिंट connection established successfully, राइट। अगर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है तो इज कनेक्टेड फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट whether we have established the connection properly or not. Yes, so connection established successfully. So after that, just once I have to check, so I have checked. So now I don't want to just repeat this execution of this particular statement again and again, so just I am putting this into comment. Okay, after that, after establishing the connection successfully, then next step is create the cursor object. Okay, so cursor object is used to execute the query, SQL query, right. So how do you create the cursor object? By using that connection object. So mycon dot cursor function. ट्राई टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, कर्सर ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपकी जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसके साथ कर्सर फंक्शन की यूज लेना है, राइट। सो ये जो कर्सर फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके देगा, एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। नाउ दिस टाइम माय कर्सर ऑब्जेक्ट नेम इज mycon, राइट, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम इज mycon. ओके, आफ्टर दैट see friends, here we want to just insert a new row to the existing table, is not it? We assume that already database employee we have created, and in that particular database already I have created the table and the table name is emp. So now you just insert this particular row to your program. Okay, so how will you do that? So let's write the SQL query, declare one variable, this time my variable name is SQL. Now write the insert command. Okay, so how will you insert a row to a table? So here the command is insert into, table name is emp, insert into emp values, insert into emp values. Now आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज एस मेथड एंड सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ डॉट फॉर्मेट मेथड. ओके, सो परसेंटेज एस इज योर ओल्ड मेथड, डॉट फॉर्मेट इज योर न्यू मेथड. अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें पूरा क्लियरली समझा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एस मेथड एंड डॉट फॉर्मेट मेथड, राइट. So here I am going to use the dot format method. So insert into emp values. Now just write the parameters. So curly braces here we need to use. So how many field names are there? Suppose in this case 7 field names are there, so I have to use 7 curly braces, right? So this one is for emp number, numeric type. Now this is for emp name, because this one is string type, so I have to enclose these braces, starting opening brace and curly brace and closing curly brace within single quotes, right. Next one is job. Job is also worker type, so use this. Next one is hire date. Hire date is date type, right. Date, when you just insert one date, at the time also you have to use the quotes. Okay, so here I need to use the quotes. Next one is salary, numeric type, so no need to use any quotes. This is for my commission and this is for my department number. Okay, so 7 brackets I have used, parameters I have used. Now this time I have to close the brackets, then close the quotes, after that use dot format. Then you have to provide the constant values, right. Sequentially you have to provide the values. That means first value is assigned to this parameters, and here this one is for first one, that is emp number. So emp number, what is the value of emp number? That is 8882. Next one is your emp name. So here you know that emp name, that is Srinivas. Srinivas is consist of characters, so here you have to use the quotes. So this value, close the quotes. Similarly job, this is your manager, so again it is string type or char type, worker type, so here you have to use the quotes. After that date,
here I have used the date format YYMMDD. Okay, so this is also date, so date also you have to enclose within quotes. And next is your salary. This is decimal type, that means one type of numerical data type, so no need to use any quotes. After that your commission, that is 500, then department is 20. Okay, so here yes, नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो जो सबसे पहला वैल्यू आपने दिया है, तो ये जो वैल्यू है ये इस पैरामीटर्स के पास हो जाएगा, और ये जो पैरामीटर्स हमने किस लिए यूज किया है, ये हमने पहला फील्ड नेम के लिए यूज किया है, ईएमपी नंबर। सिमिलरली जो सेकेंड वैल्यू है श्रीनिवास, ये आपको सेकेंड पैरामीटर्स के लिए पास की जाएगी, और ये आपका किस लिए है, जो सेकेंड फील्ड नेम है ईएमपी नेम, राइट। और इस तरह आपकी जो वैल्यूज है वो इस पैरामीटर्स को पास किया जाएगा, और ये पैरामीटर्स आप किस लिए यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नेम्स के लिए आप यूज कर रहे हो, राइट। So this is the insert statement, insert command. In this way you can use the insert command to insert a row to a particular table, right. After writing this insert command, then next part is what, you have to execute this query with the help of cursor object. So mycur is my cursor object, so mycur dot execute function, right. So execute, and here this execute function needs a variable name, because which query you want to execute. So here I have assigned the query to this SQL variable, so I have to use this SQL variable here. Okay, because आपको SQL जो query है जिसमें आपने ये insert command assign कर रखा है, now you need to execute this SQL query with the help of execute function, with the help of cursor object, right. Then as you know that insert command is the DML type of command, so we have to use mycon.commit function, because commit function क्या करता है, जो भी आप insert करने के लिए जा रहे हो ये रो आपकी टेबल पे परमानेंटली insert हो जाए, that means आपके टेबल पे एक टाइप का चेंजेस हो जाए। ओके, सो commit function is used to commit the transaction, जो आपने insert किया वो परमानेंटली आपकी टेबल के अंदर insert हो जाएगी, राइट। सो DML टाइप ऑफ कमांड्स लाइक insert कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये सब में आपको कमिट फंक्शन यूज करना है, बट कमिट फंक्शन यूज करोगे कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ, mycon, दैट मीन्स कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ, नॉट द कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो था आपकी इंसर्ट, आपने एक रो आपने इंसर्ट किया। आफ्टर इंसर्टिंग द रो, देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ईएमपी टेबल। दैट मीन्स आपकी ईएमपी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, पुराने रिकॉर्ड्स प्लस अभी जो आपने न्यू रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किया, वो सबको आप फेच करिए। फेच करिए मीन्स एक्सट्रैक्ट करिए और उसको डिस्प्ले करिए, राइट। तो हाउ डू यू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स we have to use the select command. Okay, so let's use the select command. So here again you define a query variable and assign the select statement. So select all the records, that means we have to use star, select star from table name. So here my table name is EMP, right. So this is the query to select all the records from the table. Then execute this query with the help of cursor object. So mycur dot execute SQL. बट देखो अभी आपने क्या किया, जस्ट एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब आके आपकी रिजल्ट सेट में स्टोर हो जाएंगे, और रिजल्ट सेट से फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ फेचल फंक्शन। अगर आप सारे रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, यूज फेचल फंक्शन। वन रिकॉर्ड एट ए टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो फेच वन फंक्शन आपके पास है। सपोज आपको कुछ रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है एट ए टाइम, सपोज 2 रिकॉर्ड्स 3 रिकॉर्ड्स, एट दैट केस you have to use fetch many method, but remember friends fetch many method पे आपको वो नंबर भी पास कराना पड़ेगा। ओके, so mycur dot execute SQL. After that now declare one variable result equal to just mycur dot fetch all function, because in this case I want to extract all the records of fetch all function. So now that result is one variable, and that variable is a list type of variable, and that list type of variable contains all the records in the tuple form. So you have to just extract the tuples by continuing your loop. So for x in result, क्योंकि ये जो result है, result एक वेरिएबल का नाम है, और इस result जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है, अभी ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, बट ये लिस्ट में अभी पूरी रिकॉर्ड्स जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपका टेबल पे
वो सारे रिकॉर्ड्स टपल फॉर्म पे है। ओके, तो आपको अभी उन टपल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर लूप या कोई भी लूप, आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, आप कोई भी लूप चलाओ और उसमें से एक एक टपल एक्सट्रैक्ट करो। नाउ एक्स इज व्हाट टाइप ऑफ variable? That is tuple type of variable, right? So print x. In this way you can display the records from the table one by one. Hope all of you understood. After that, once we have established the connection, now after processing, then we have to just close the connection. So how will you close the connection? mycon dot close function is there. Okay, one is connect function is there to connect to establish the connection. क्लोज फंक्शन इज देयर टू क्लोज द कनेक्शन, राइट। अगर ये क्वेश्चन आप थियोरेटिकली सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, बट प्रैक्टिकली अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंजेस अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, राइट। लेट्स क्रिएट द डेटाबेस। सो आफ्टर क्रिएटिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, जस्ट आई एम पुटिंग दैट all the statements in comment form. Okay, so how do you create the database? Here just you can execute the query sql equal to create database, and database name is employee. Create database employee. Okay, so with this create command you can create one database. After that here execute this. So mycon dot execute SQL. Okay, after that you can just print one statement if everything is okay. That means if you have already successfully you have created the database, then here just print a statement database created successfully. Okay, so let's execute the program, but here I am not including this database because this time I am going to create the database. Okay, first you create the database, after that you just include the database in your program. Okay, so let's execute the same. Now you can see database created successfully. So here now you include the database. Okay, but after including the database again you have to put these statements into comment form, because once you have created the database in your program and the database is employee, then if you are executing the same statement once again, then your Python will just display the error message. So friends, after creating the database, then you just include the database part in your connect function. After that you just create the table. So how will you create the table? Same, declare one SQL variable, या और कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल का नाम आपका आइडेंटिफायर नाम है, कुछ भी हो सकता है। सपोज दिस टाइम आई एम गिविंग क्वेरी, सो क्वेरी इक्वल टू क्रिएट टेबल कमांड वी हैव। ओके, सो क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम दैट इज emp, आफ्टर दैट पुट अ ब्रैकेट एंड start writing the field names. This is first field name, that is emp number. So as you know that emp number is what type of data that it contains, that is integer type. So int data type you have. Next you can insert primary key constraint in this particular field also, but what is the speciality of primary key? प्राइमरी की आप उस फील्ड में आप अटैच कर सकते हो जिस फील्ड में आपको यूनिकली डेटा आपको स्टोर करना है। दैट मीन्स लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब यूनिक डेटा होता है। तो आप इस सब फील्ड में आप प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हो। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक टेबल में एक ही बार प्राइमरी की आप इंसर्ट करोगे, एक फील्ड में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड्स में भी आप कंबाइन करके भी प्राइमरी की आप पुट कर सकते हो। बट एक टेबल डिक्लेरेशन के टाइम पे एक ही बार प्राइमरी की आप यूज करोगे, राइट। सो हियर जस्ट आई एम यूजिंग द प्राइमरी की इन दिस फील्ड emp number. After that second field name is emp name, and as you know emp name contains the number of characters. So here worker data type is there. After that you have to use the length. Suppose 20 characters, maximum 20 characters you can include in this particular field. Okay, next is your job. So this the data type of job is also worker type, because job field name also contains the number of characters. After that hire date data type is date type, right.
बिकॉज डेट जो है उसका एक अलग सा टाइप होता है डेट, तो आप डेट टाइप यूज़ कर सकते हो। डेट भी एक डेटा टाइप है लाइक इंट, वर्कर, decimal, like this. Similarly, next is salary, and data type of salary is decimal, so here you can use decimal. After that, commission, that one is another field, data type is integer type. Next is department number is also integer type. Close the bracket, then close the quotes, right? So this create table command is used to create the table. So now you just execute the query. So how will you execute? That is mycore dot execute function, and here you need to pass the query variable name, right? Then just before executing, just if you will create the table successfully, then here I just print one message to display that print table created successfully, right? So in this way you can create a table. So how do you create a table? That create table command is there, create table, table name, then write the field names with that proper data type and proper constraint also. Okay, अगर आप किसी में कोई constraint आप use करना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की का यूज़ किया है, right? So let us execute the program. First save your program, then execute it. Now you can see table created successfully. That means already we have created the table, and where we have just stored the table, that is in employee database, right? So now again what you need to do, अगर आपने एक बार ये टेबल EMP आपने क्रिएट कर लिया है तो आप इसको फिर से कमेंट में डालिए, बिकॉज आपको दोबारा इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। सेम नाम का टेबल फिर से आप सेम डेटाबेस एम्प्लॉय के अंदर नहीं रख सकते हो, राइट? सो फ्रेंड्स, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, देन we have to insert the rows into the table. Okay, so let's check the question. Now here you can see, now friends, you can see the already this table contains these rows. Okay, now we have to insert all these rows. Okay, and after that we have to execute the program. Okay, so let's insert the rows into the table. So change the values. For example, the first row is suppose 8369 and name of the employee is Smith. Job of the employee, that is clerk, right? After that, hire date is 1990, month is 12, and here is date is 18, not year, that one is last one is date, and salary is 800. Salary is 800 and commission is 400, then department is 20, right? So this command we need to execute because already we have created the table. Then now we have to insert this row to the table. So let's execute the same. After executing this, just I want to display a message that print row inserted successfully, right? Row inserted successfully. So let's execute the program because this is the first row I have inserted. Save the program, execute it. Now row inserted successfully. Now next time, again if you want to insert the second row, right? So just change the values. Suppose this time the EMP number is 8499 and the name of the employee is Anya. Designation or job of the employee is salesman,
and hire date it is 1991, month is 02 and date is 20 and salary is 1600, then commission is 300 and department is 30. Okay, so this is the second row. Now let's save this, then execute this. So second row also we have inserted successfully. Now let's execute the same program with the different third row, right? So third row, what is the employee number, that is 8566 and name of the employee is Seth. Then job of the employee salesman and hire date is suppose 22/2/1991 and salary of the employee is 1250, then commission is 300 and department is 30. Okay, so let's execute the program. First save this, then execute it. Similarly we have inserted the third row. And so friends, in this way you can insert the rows to your table, right? So let's display the data. So here SQL equal to select start from EMP, mycore.execute SQL. After that fetch all function I have used to extract all the records, then I have continued the loop to display the records, right? And here you remember, once you have used the insert command, after that if you want to execute with this insert command, then error message will come because सेम नेम की जो सेम एम्प्लॉय नंबर की जो रिकॉर्ड्स है वो आप एंट्री नहीं कर सकते हो, राइट? सो आप क्या करो, इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, बिकॉज हमने जितने भी रोज मैंने अभी 3 रोज आपको इंसर्ट किया, बट आपके पास 6 रोज है, तो आप इस तरह 6 रोज भी आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट? और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है कि आप अगर लूप चला के भी आप जितना रिकॉर्ड से आप एट ए टाइम भी आप उसको एंट्री करा सकते हो, तो आप ये यूज कर लो या फिर वो वाला मेथड यूज कर लो, राइट? सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अभी जितना हमने रिकॉर्ड्स एंट्री किया वो सबको डिस्प्ले कराने के लिए। सो सेव योर प्रोग्राम। नाउ यू सी 3 रोज वी हैव इंसर्टेड। ओके, आप अगर इस क्वेश्चन को थियोरेटिकली लिखना चाहते हो तो प्रीवियसली जितना कोड था वही सफिशिएंट था, बट अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो आप अभी यहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आप अभी इसको आपने कमेंट में डाला, नेक्स्ट आप क्या करो, ये जो अभी हमने लिखा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 रोज ऑलरेडी हमने इंसर्ट किया है और अभी एक न्यू रो उस टेबल में आप इंसर्ट करने जा रहे हो, राइट? तो आप अभी इसको एग्जीक्यूट करिए। अब देखो आपके पास ये जो लास्ट रो है वो भी आपने ऐड किया। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट हाउ कैन यू इंसर्ट a row or more than one rows in your table. Okay, so hope all of you understood. Question number 2 says write a Python database connectivity script that modify the salary to increase 1000 for all who get salary less than 1500 in the EMP table of the database employee. Okay, तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जिसका सैलरी 1500 से कम है, फॉर एग्जांपल 800 और 1250, नेक्स्ट 1250, तो इन सब में आप क्या करिए, आप 1000 इंक्रीज करके उसमें स्टोर करिए और फिर उसको आप डिस्प्ले करिए, राइट? सो लेट्स डू द क्वेश्चन प्रैक्टिकली। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 2, as you know this is also Python database connectivity program, so we have to just write these 3 statements. Okay, import mysql.connector in our program. After that we have to establish the connection by using the connect function of mysql connector package, and it returns one object, connection object, and my connection object name is mycon. After that I have already declared one cursor object to execute the SQL query. Okay, hope all of you understood. After that, now how do you update the records in your EMP table? Okay, क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि जिसका जितनी सैलरी 1500 से लेस है उनके सैलरी पे आप 1000 ऐड करिए, उसके बाद फिर आप डिस्प्ले करिए, राइट? सो हाउ विल यू डू दैट? Declare one variable. Here this time my variable name is SQL and assign the SQL statements to this variable. Okay, so how will you do that? Update table name is EMP. Okay,
update is one data manipulation type of command, and here update command is used to modify the records. Okay, आप अगर कोई टाइप का चेंजेस करना चाहते हो रिकॉर्ड्स के अंदर तो आप अपडेट एंड सेट यूज करिए. अपडेट ईएमपी सेट, क्या करना है आपको, सैलरी पे सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस, देखो सैलरी फील्ड नेम्स का नाम है, राइट. तो सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस. नाउ ये आपकी वैल्यूज है. ओके, सो वैल्यूज के टाइम पे आपको क्या यूज करनी है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देन कंडीशन देना है आपको, कहाँ पे आपको चेंजेस करना है, वेयर सैलरी इज लेस देन 1500, राइट. 1500 ही आपकी वैल्यू है. सो हियर ऑल्सो यू नीड टू यूज द कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देन क्लोज द कोट्स. आफ्टर दैट यूज द फॉर्मेट मेथड, एंड फॉर्मेट मेथड हियर यू नीड टू पास द वैल्यूज. पहला आर्गुमेंट के लिए कौन सा वैल्यू होगा, आपको 1000 ऐड करना है तो जस्ट राइट डाउन 1000. एंड सेकेंड जो वैल्यूज है वो सैलरी 1500 से लेस है तो उसके लिए आप क्या दे रहे हो, 1500. आपको ये चीज सबको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपने 1000 वैल्यू आप दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो, आप यहाँ पे सैलरी के पास जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रेसेस है आप उसको दे रहे हो कि सैलरी पे चेंजेस हो, जो भी सैलरी है उसमें 1000 रुपीज ऐड हो जाए. वेयर सैलरी इज लेस देन, सेकेंड ब्रैकेट के लिए आप दे रहे हो 1500 कि जिसका सैलरी 1500 से कम है उनके सैलरी पे 1000 ऐड हो जाए, राइट. So in this way you can use the update command. After that you have to execute the query by using cursor object. So mycur dot execute, then pass the variable name. So here my variable name is SQL, mycur dot execute SQL. After that update is also DML type of command. So you have to use the commit function to change it permanently in your table. So mycon dot commit function, right. Hope all of you understood. So this is the, in this way you can use the update command. Now select the rows or records from the table, then display it. Okay, so for this select start from EMP. This SQL query I have assigned to this variable SQL. Now execute this variable, execute this query. After that use the fetch function and display the records. Okay, तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस आपको पता चल जाएगा. बट बिफोर दैट ऑल्सो इफ यू विल डिस्प्ले द डेटा देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पहले डेटा रिकॉर्ड्स क्या थे और अभी जो हमने अपडेट कमांड यूज किया है उसके बाद क्या चेंजेस हुआ. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक बार अपडेट करने से पहले ये चीज़ आपको डिस्प्ले करा दे रही हूँ सो दैट आप पहले रिकॉर्ड्स देखिए, फिर अपडेट कमांड यूज करने के बाद क्या चेंजेस हो रहा है वो भी आप देखिए, राइट. हियर आई जस्ट यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट that after using update command. So let's execute the question. Now you see that initially these records are there. So here you can see this is 800 salary part. You just check that employee number 8369 having the salary 800, that is less than 1500. Similarly employee number 8566, the salary part is 1250. Now after using update command, देखो आपका जो सबसे पहला जो 8369 पे जिसका 800 सैलरी था अब उसमें 1000 रुपीज ऐड हो चुका है तो ये अभी 1800 हो गया है. सिमिलरली जो आपकी 1250 था उसमें आपकी 2250 हो चुका है बिकॉज वहाँ पे भी 1000 रुपीज ऐड हो रखा है क्योंकि ये जो दो सैलरीज पार्ट थे ये आपकी 1500 से कम थे तो आपने इनमें अपडेट किया, राइट. सो इस तरह आप अपडेट कमांड अपने टेबल पे यूज कर सकते हो. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Now let's discuss the question number 3. So question number 3 says write a Python database connectivity script that deletes records from EMP table of database employee that have job is salesman. After that display the details of employee. So यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको records delete करना है, वो भी जिसका job salesman है वो सारे records आपको delete करना है, right. So जैसे कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर है 8499 8521 ये इनका जो जॉब है सेल्समैन है तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है, राइट. कंडीशन है जिसका जॉब सेल्समैन है यू हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड्स. ओके, सो लेट्स राइट द प्रोग्राम. सो फॉर दिस आल्सो वी हैव टू include these three statements. Okay, import mysql.connector package to our program, then establish the connection by using the connect function, then create the cursor object.
So here I am going to just execute the delete command. Okay, so declare one variable and assign the SQL query to this variable, that delete. Okay, delete is DML type of command. So delete from, table name is EMP, delete from EMP. Condition is what? Where job equal to salesman, right? Job equal to salesman, right? So here delete from EMP where job equal to, now again I have to use that bracket start bracket close, that means parameters, so that I have to pass the job to this. Okay, so delete from EMP where job equal to this, close the bracket. But friends, here you need to remember that job data type is worker, so here we have to use the quotes. Okay, if you will not use the quotes, then obviously your Python just displays the error message, right? So after that use the format method. Here you need to pass the constant value. So जॉब का नाम क्या होना चाहिए? सेल्समैन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेल्समैन भेज दीजिए. तो ये जो आप वैल्यूज आप पास कर रहे हो, आप किसको पास कर रहे हो? इस जॉब फील्ड को पास कर रहे हो. ओके, देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल के लेटर्स में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो आपकी एसक्यूएल है वो आपकी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. दैट मीन्स आप यहाँ पे स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो. ओके, सो जिसका जॉब सेल्समैन है, आप उन रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करना चाहते हो. ओके, आफ्टर दैट यू जस्ट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. सो mycore dot execute and here your variable name is SQL. So after that, as you know, delete is DML type of command, so obviously we have to use the commit function, right? So mycon dot commit function. After that again we have to display the data, display the records, right? So for this we have to use the select commands, that select start from EMP, then mycore dot execute SQL, then extract the records by using the fetch function, then display the records. Okay, and close the connection. mycon dot close function. Okay, and here also देखो आप डिलीट कर रहे हो, बट डिलीट करने से पहले आपकी जो टेबल है उसमें कौन सा रिकॉर्ड्स था वो भी आपको चेक करना है ना. तो आप उसके लिए क्या करो, सबसे पहले भी आप एक बार आप ये जो सिलेक्ट क्वेरी है आप उसको पहले भी एक बार डिस्प्ले कर दो. क्यों? क्योंकि आपको पहले आपकी ओरिजिनल जो डेटास थे वो आपको पहले आप देख लोगे, उसके बाद जो डिलीट करने के बाद कौन कौन से रिकॉर्ड बच गया वो भी आप देख सकते हो, राइट? सो फॉर दिस डिलीट करने से पहले आई हैव ऑलरेडी यूज द सिलेक्ट कमांड, डिलीट करने के बाद ऑल्सो आई हैव यूज द सिलेक्ट कमांड. ओके, सो हियर जस्ट आई वांट टू write one statement that print after deletion okay, so save this program, then execute it. Now you see, before applying the delete command आपके पास 4 records थे, और इन 4 रिकॉर्ड्स में आपके पास सबसे पहला रिकॉर्ड का जॉब जो है वो क्लर्क, सेकेंड रिकॉर्ड की जो जॉब है सेल्समैन, थर्ड रिकॉर्ड की जो जॉब है वो भी सेल्समैन, एंड फोर्थ रिकॉर्ड का जो जॉब है वो मैनेजर. सो अभी आप डिलीट कर रहे हो, किसका डिलीट कर रहे हो? जो सेल्समैन है उनकी रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर रहे हो, राइट? तो आफ्टर डिलीशन आपके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही बच गया है, और वो है क्लर्क एंड मैनेजर का. ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज द डिलीट कमांड टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, राइट? सो फ्रेंड्स, hope all of you understood all these 3 questions, but it is my advice to you, you just do it practically, because when you will do the questions practically, then you will very much clear about that concept, right? And if you want to know any concept minutely, then please refer my previous video, that is Interface Python with MySQL. In that video I have described all the things very neatly and cleanly, right? So also I will provide the link of that video in this description part of this video. So do it practically and keep watching. Thank you.